This is the tongue through which pharynx opens. Pharynx. This is the pharynx region which opens from the tongue and mouth and goes down. Through which anteriorly there is trachea. This is the trachea with the tracheal rings go down inferior region. So this is the thyroid gland. Thyroid gland has 2 lobes and 1 isthmus. This is the hyoid bone. Thyroid cartilage. क्रिकॉइड कार्टिलेज फिर थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज, ये 2 प्लेट है. तो वो वाला क्रिकॉइड है. ये क्रिकॉइड ये वाला है. The small plate is cricoid cartilage and this one is thyroid cartilage, both laterally placed. Thymus gland has 3 surfaces, 2 borders, 1 apex, 1 base. Lateral surface, posterior lateral surface, medial surface. This is the apex, base, and the 2 borders are anterior border and posterior border. The lateral border, the posterolateral is related to the carotid sheath and its content, which the carotid sheath is formed by the tracheal deep invaginating layer of deep cervical fascia of trachea and मेरा चेहरा क्यों दिखा दिया, and वो anteriorly and posteriorly by the vertebral layer of innervating layer of deep cervical fascia. Content are vagus nerve, internal jugular vein and internal carotid artery and common carotid artery. Laterally it's by the 4 S muscles, हैं? 4 S muscles. हाँ. Stylohyoid, stylothyroid, स्टर्नोहेड, sternothyroid, stylocleidomastoid, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, right? और superior belly of omohyoid muscle. Bone. लेके आजा. अबे isthmus पे, मसल्स भी तो दिखा ना. अबे यहाँ पे जो 2 थे ना, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल रिकरेंट. ये रहा. हाँ, दिस इज एक्सटर्नल रिकरेंट नहीं है, वो सुपीरियर एक्सटर्नल लैरेंजियल. लैरेंजियल है. तो ये वाला है रुक मैं दिखाता हूँ. ये है आर्टरी और ये टूटा हुआ है नर्व. हाँ, कौन सा नर्व है वो बोल. एक्सटर्नल रिकरेंट, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व है और सुपीरियर थायराइड आर्टरी है. सुपीरियर थायराइड आर्टरी नीचे जाके इट विल गो डाउन एंड इट विल डिवाइड इनटू 2, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. द एंटीरियर part of the superior thyroid artery of both the sides, they join anastomosis in the upper border, superior border of the isthmus, and in the base, lower border of the isthmus, the inferior thyroid vein comes out. Yes. Then wait, और भी था कुछ और भी था ना. इसका मैं इसका 2 surfaces है, anterior posterior is related to the second, third and fourth tracheal rings, whereas the anterior it is related to the skin, superficial fascia, anterior jugular vein and the deep fascia. And और क्या था वो तो veins का नाम जो brachiocephalic veins and all. Nerve supply is by superior thyroid artery, which is a branch of external. nerve supply में superior Nerves are blood supply में superior thyroid artery, inferior thyroid artery and thyroid, which is very rare. Okay, 30% individuals. And फिर क्या था, veins are 4 veins, superior thyroid vein, intermediate thyroid vein, medial intermediate thyroid